This video is for the explanation of the concepts of Earth's magnetic field up to the level of boards, that is class 12th. So, Earth's magnetic field, it is represented by Be, and it varies from place to place on the Earth's surface. For example, मान लीजिए कि कोई लखनऊ में है और मान लीजिए कि कोई कनाडा में है, तो इन दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, इट विल वेरी. सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यू कैन से. और यूजुअली इसकी जो वैल्यू होती है, इट लाइज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला. अपार्ट फ्रॉम टेस्ला, विच इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट, there is one more magnetic field unit, that is Gauss. So comment in the comment section okay, what is the relation between one Gauss and Tesla. Okay, so the first question that arises is, what causes the earth to have a magnetic field, but the fact is it is not clear. वैसे इसके बारे में एक सिंपल सी थ्योरी ये बनाई गई है कि you must be knowing कि inside the earth, that is inside the below the earth's surface, you have a core of the earth's main solid part, so that usually is covered inside the liquid form of metals, mostly consisting of nickel and iron. So this Nife is nickel and iron, and there are many other heavy metals also and noble metals also. So since they are in molten state, they are mostly present in the form of ions. As the ions are moving, charges are moving, and since the huge number of charges are moving, so the earth has its own magnetic field. This is the most plausible and till now the most acceptable reason for the earth to having its own magnetic field. So I hope this would be clear, and this particular effect is called dynamo effect. Okay, so this dynamo effect has a very less chances of being asked in the board's examination, but do remember that dynamo effect is related to the production of magnetic field of earth. Okay, so now one more thing is there, that first of all earth was assumed to be a simple horizontal sphere, but later on it was discovered that it is actually tilted on its axis, making some angle with the vertical. ठीक है, पहले ऐसा पाया गया था कि अर्थ जो है वो सिंपल एक स्फीयर है जो सीधे सीधे रखी है. सो यू कैन से कि इट्स एक्सिस इज एग्जैक्ट वाई एक्सिस, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर और वर्टिकल. लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. यू मस्ट बी नोइंग कि अर्थ इज एक्चुअली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. वो बिल्कुल सीधे नहीं होती, वो थोड़ा सा टेढ़ी होती है. सो डेफिनेटली इट्स एक्चुअल रियल एक्सिस is making certain amount of angle with the vertical, that is y-axis. So that angle is approximately 11.3 degrees. So this you will see in the later in the figure. Okay, so वैसे अगर हम लोग नॉर्थ पोल की बात करें तो one could answer कि it would be located in the Arctic region and South Pole would be located in the Antarctic region. लेकिन ऐसे सुनने में लगता है कि it will be 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ. So in reality the magnetic north is not located in the 90 degree north and magnetic south is not located in the 90 degree south. तो असल में रीज़न क्या है? अगर अर्थ बिल्कुल नॉर्मल होती, यानी कि उसकी जो एक्सिस है इट वुड बी वर्टिकल, तो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट वाले भी, मैग्नेट वाले मतलब जहाँ से उसकी फील्ड आती और जाती है, सो वो दोनों केस में भी वो 90 होता. लेकिन रियलिटी में क्या है, अर्थ इज टिल्टेड. तो जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे मैग्नेट वाले, यानी जहाँ से फील्ड आएगी जाएगी, वो टिप तो दोनों की थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी ना फ्रॉम द वर्टिकल. सो इट विल नॉट बी एट द 90 डिग्री. सो दैट इज़ वाई इट इज़ 79.74 एंड 71.8. दीज वैल्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर दीज वैल्यूज completely. So the main point is that the values of north pole, magnetic north and magnetic south, are not located at exactly 90 degree. That is the main concept. Values you need not to remember. Then the next thing that we need to confirm is, what is the difference between geographic and magnetic things? Geographic north, geographic south, and magnetic south. So first thing is the geographic values. If you see in the figure, now let us see in the figure. The figure shows that what is the difference between magnetic and geographic values. Okay, so the magnetic
pole or the magnetic values actually represent the vertical lines, and the geographic, that is the actual geographical position, is the tilted one. Clear? So the geographical axis and magnetic axis do not coincide because geographic axis is actually tilted. How much? It was 11.8 degrees. So obviously the geographic north and magnetic north will also not coincide. ठीक, तो जहाँ पे geographic axis है वहाँ पे जहाँ पे भी surface होगी it will be geographic north, और जहाँ पे भी magnetic north होगा वहाँ पे it will be magnetic axis वाला surface जहाँ पे touch करेगी. Now if you see in the diagram you will see कि geographic north pole is also called magnetic south pole, and magnetic north pole is below and it is called geographic south pole. जो हम लोग आज तक नॉर्थ और साउथ समझते आए हैं दैट इज़ द जोग्राफिक वैल्यू, पहले तो उसको समझ लीजिए. ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है. सो दीज वैल्यूज़ आर द जियोग्राफिक वैल्यूज़. एक्चुअली क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उल्टा फ्लो करती है. सो देयर वॉज एन इशू विद द नोमेनक्लेचर. जो हम लोग एक्चुअली नॉर्थ बोलते हैं इट इज़ द साउथ पोल ऑफ द अर्थ. तो इसका मतलब जो साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अर्थ की, दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ, एंड द magnetic north pole is in the bottom. So now if you see the field lines of the earth surface you will see okay these are originating from the bottom and going inside the earth from the top surface. So in this case it is clear that the north pole is below the earth surface and the south pole of the magnetic part is on the top of the surface. So from this it is clear. तो जो आप नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग समझते आए अभी तक दैट इज़ जस्ट द रेफरेंस, बिकॉज जिधर भी मैग्नेट की नीडल पॉइंट करती थी दैट वाज नॉर्थ पोल, उसको हम लोग नॉर्थ बोलते थे. आप सबको यही पता होगा कि अगर मैग्नेट नॉर्थ दिखा रहा है जिधर भी वही नॉर्थ होता है अर्थ का. लेकिन खुद सोचिए अगर मैग्नेट नॉर्थ की तरफ कंपेयर हो रहा है सो इट वुड डेफिनेटली बी साउथ पोल ऑफ द अर्थ, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है उधर की तरफ, बिकॉज नॉर्थ डज नॉट अट्रैक्ट्स नॉर्थ. सो दैट इज़ वाई द नेमिंग इज ऑपोजिट. ठीक है, तो याद रखिएगा टेक्निकली द साउथ एंड नॉर्थ पोल आर ऑपोजिट एंड कन्वेंशनली वी कॉल द नॉर्थ पोल ऑन द आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल ऑन द एंटार्क्टिक रीजन. सो दिस वॉज द इशू विद द nomenclature of poles. ठीक है, so just remember this. Then there are few terms that are related to magnetism that I have already discussed. Geographic axis कौन सी होती है? Geographic axis is passing through the geographic north and geographic south, that is tilted one, and magnetic one is the straight line, it is not tilted one. Then geographic equator, obviously the tilted equator will be the geographic equator. Magnetic equator, it will be the exact horizontal equator. Then geographic meridian, the plane perpendicular to the surface of the earth and passing through the geographic axis is called geographic meridian. And similarly the opposite one will be magnetic meridian. So these are the few terms that are related to Earth's magnetism. Just remember the definitions. It would be better if you remember the entire diagram. That is the best portion. So see, you can represent the entire Earth as a bar magnet. ठीक है, तो जिधर से फील्ड निकलती है एक्चुअली साउथ पोल से निकलती है. ठीक है, तो मैग्नेटिक तरीके से बोलेंगे तो दैट विल बी नॉर्थ. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि कहाँ से कहाँ निकलती है फील्ड. Okay, so now the three elements of Earth's magnetism. Now Earth magnetism can be explained in its three different components, or you can say three different elements. Now first of all see the figure of the needle. आप needle देखिए, horizontal you can see. So this can be your book or the page of your book or page of your register. It is a horizontal. ठीक है, और you can say table. इससे जो needle है वो जो भी टेढ़ी होगी, so whatever angle is being made by the compass needle with the horizontal, that is called angle of dip. ठीक, so it shows the magnetic axis actually. So just remember the definitions are very important. So the definition of magnetic declination, angle between geographical meridian and magnetic meridian. So what is it? It is basically 11.8 degrees whatever you are discussing. यानी कि जो मैग्नेटिक मरीडियन होती थी यानी कि सीधे वाली, और जो जोग्राफिक मरीडियन होती थी यानी कि टेढ़ी वाली, सो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है डेट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. देन एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दिस इज द वेरी crucial definition, and as well as this is the most important term of all three. Why? Because
it consists of numericals. So it is the angle between the Earth's total magnetic field, that is B or BE, with the horizontal direction is called magnetic meridian. Now see, angle of dip can be measured as, कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस लीजिए, एक्स एक्सिस यू कैन एज्यूम, उससे अर्थ की किसी भी पॉइंट पे जो भी टोटल फील्ड होगी उसका जो भी डायरेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और एंगल और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. ठीक है, डेक्लिनेशन और इंक्लिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा. डेक्लिनेशन शोज द एंगल बिटवीन द एक्सिस. Now the third thing is horizontal component of Earth's magnetic field. So any vector can be represented into its horizontal and vertical components. Same thing can be done for the Earth's magnetic field. So Earth's magnetic field has two components, horizontal and vertical. So horizontal component can be written as BH, which will be equal to B cos delta. This delta is angle of dip. Please remember, in the formulas and numericals you will use angle of dip or angle of inclination, not declination. ठीक है, सो बी एच विल बी इक्वल टू फील्ड बी ई ऑफ अर्थ. दिस बी इज द टोटल फील्ड, टोटल कुल मिला के किसी भी प्लेस पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की होगी वो उसका कॉस थीटा, और यू कैन से कॉस डेल्टा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बी साइन डेल्टा. So if you have to find, if you are given the horizontal and vertical components, you are being asked to find the net magnetic field. It will be under root bh square plus bv square, because these two vectors are perpendicular. So the resultant will be from Pythagoras. Another thing is important is that if bh and bv are given, you can find the angle of dip. How? You can divide bv by bh, you will get tan delta. So this is another important concept, इसको याद रखिएगा कि how to find angle of dip. Divide bv by bh, you will get tan delta because b will get cancelled. ठीक है, so these are the important numericals. and yes, इन फॉर्मूले में से numericals आते हैं और इन definitions से भी पूछे जाते हैं questions. One important note point, angle of dip is 90 degree at poles and 0 degree at equator. ठीक है, तो this should be remembered. इससे क्या पता चलता है कि if angle of dip is at 90 degree, so substitute 90 degree in the formula. क्या होगा? BH will become 0. There will be no horizontal. And this should be obvious. If you again see the figure, you will realize that at the poles, the field is almost perpendicular to the surface. तो सही बात है. There will be no horizontal because the net field itself is in the vertical direction. तो horizontal तो हो नहीं सकता. But this becomes completely opposite in the case of equator. Equator में 0 degree होगा. इसका मतलब the field is exactly horizontal in the places that are located at the equator. So there will be no vertical component. If you substitute 0 degree, you will get the required concept. So this is all which is related to Earth's magnetic field that can be asked in the board's examination. So if you have any doubt, please do comment. Thank you.